वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हमारी जीके की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज़ कॉल्ड अ सेल। शॉर्टकट की ऑफ अनडूइंग टाइपिंग इज़ Ctrl+Z. Shortcut key of Ctrl A used for to select all text. www stands for World Wide Web. Which shortcut key is used to use the find and replace feature? Ctrl+H. Which is the default page setup orientation of slide in MS PowerPoint? Landscape. Which option is used to copy formatting from one place and apply it to another? Format painter. A camera uses a dash to form an image on a piece of film at the back. So the right answer is convex lens. Shortcut key to close an application or a window. Alt+F4. RAM stands for Random Access Memory. What is the full form of URL? Uniform Resource Locator. What is the shortcut key to open a new MS Word document? Ctrl+N. What is the shortcut key of help in MS Word? F1. What is the shortcut key to copy the text? Ctrl+C. The most widely used internet service engine in the world is Google. What is the shortcut key to open the dialog box? Ctrl+F12. Which is not included in the font style in MS Word? तो यह है superscript. IP stand for Internet Protocol. To insert a hyperlink, which shortcut key is used? Ctrl+K is used to enter hyperlink. Which shortcut key for opening the font dialog box in Microsoft Word? Ctrl+D. तो बंदा याद रख सकता है Ctrl+D for dialog box. Thesaurus tool in MS Word is used for synonyms and antonyms word. How many ways to save file in MS Office? 3. What is the default file extension for all Word documents? .docx. What is gutter margin in MS Word? Margin that is added to the binding side of a page when printing. Email stands for electronic mail. MS PowerPoint is used for presentation. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Object on slide that holds text are called placeholders. Which key is used for left alignment in MS Word? Ctrl+L. How many generations of computer has? Computer has 5 generations. Third generation computer uses ICs, integrated circuits. Which version of the Microsoft Office is not valid? So Office Vista is not valid. In MS Word, which shortcut is used for print preview? तो याद रखिएगा अक्सर लोग Ctrl+P को क्लिक कर देते हैं. That's the wrong option. The right option is Ctrl+F2. Which key on the keyboard can be used to view slideshow? F5.
What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? 1638. Title bar is horizontal area located at the very top of the screen. FTP stands for File Transfer Protocol. Header and footer command are located on the Dash tab in MS Word. Insert tab. Which of the following is the correct email format of email address? Name @ website.com, like ali@gmail.com। आगे मूव करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट भी हमें कर दीजिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट MCQs। शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइन, Ctrl+E। By default, your document print in dash mode. So by default, our document is printed in portrait form. Thank you for watching our video. अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।